Hi, I welcome you all to the film discussion of Barah by Gaurav Madan. The film is going to be screened on the Cineville Annual Film Festival on 9th of April. We have Gaurav Madan Asvidya. Gaurav Madan is a writer filmmaker. Gaurav has been a part of several filmmaking crews. He has been the AD in films such as Piggan Murgan and Barah. Gaurav has his own production house as well, known as the Last Joker Pictures. Gaurav's films have been a part of several film festivals and they have won as well. And Gaurav personally has won the Best Writer and Best Director award in these film festivals. So Gaurav's first feature-length film is going to be screened in the Cinema Festival, which is known as Barah by Barah. Barah by Barah was released in 2021. Gaurav is Asvidya. So hi Gaurav, how have you been? Hi, I'm good, and thank you for having me here. Yeah, same here, Gaurav. I'm so happy that we were able to reach you. How has been the journey of the film in the past year or so? So I would say journey has now become fulfilling because unfortunately my film came out in the peak of the pandemic. Usually when us filmmakers we make films, making or completing your first film is basically your long-lived dream. And you basically hope that the film should come out and it should travel to a lot of festivals, a lot of people should see the film. But unfortunately, world was going through a shutdown when my film got completed. Right. I'm thankfully the journey started last year in February, and we have been to more than I think almost 40 film festivals by now, and almost like 6 to 7 awards. So I would say, yeah, it has now become a little fulfilling for me, the journey. Right. So, Gaurav, apart from this film, what have you worked on recently? Like इस film की तो बात हम लोग कर लेंगे, but new films that you have been working on, any ideas that you have right now? तो बेसिकली मैं एड फिल्म मेकर हूँ, बॉम्बे में काम करता हूँ मैं. तो हालांकि एडवर्टाइजिंग मेरा पहला प्यार नहीं है, पहला प्यार लॉन्ग फॉर्मेट है, लॉन्ग फॉर्मेट एंड नैरेटिव, बी शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स. बट व्हेन यू live in a city like Bombay or Delhi, you need something to give you bread and butter, right? So advertising is basically my bread and butter, and this is narrative is what I really love. Right. So currently I am shooting some stuff for DHL. The last ad that I shot was for Pedigree. The pet food. Yeah. So and I'll be shooting some stuff in the coming months. Apart from that, I am also gearing up for my second feature film, which is a Marathi language film. It's called Kanda Manda, the Giant Onion. Right. So that script was a part of NFDC Screenwriters Lab last year. So that will be my second feature film. Great. So Gaurav, coming back to the film, I have a few questions for the film. So my first one would be how did you get the idea for the film? Like the idea is a unique one. I haven't heard such a script जहाँ पे एक death photographer का कोई explore करता है. So how did you get the idea for the film? So I kind of have a knack for attracting these novel characters and these novel ideas. The idea where it came from. So my writing partner, who's also the producer on the film and the cinematographer, Hani Lahiri. Right. We are like frequent collaborators. Okay. So he was once upon a time keen for another feature film, which he was working on, and he happened to be to go to Banaras, and there he met a death photographer, because it's a real profession. There are real death photographers. There used to be, now though it's a dying profession. So he had met this character and he had really liked it. And one fine evening he told me about this character, and I jumped at it. I thought it is such a novel, such a cinematic character. It has immense cinematic potential. Right. So I jumped on the idea, and we decided that it is a great subject matter, and also this character works in Banaras, Manikarnika Ghat, and Banaras is a
there can't be any space which is more cinematic than Banaras. Yeah. So both these things kind of really excited me, and we decided to make a film. Great. So basically, it was not the guy gave you an idea and you just hopped onto it in a way. Basically, he also had this character. He knew about this character. Right. And he told me about the character, and then we went to Banaras together, and we stayed there at Manikarnika Ghat and wrote the script. Okay, so you were there for a decent amount of time, right? I mean, it might seem so, after watching the film. But in fact, we wrote the script in 15 days flat, and this is the fastest I have written a feature film script. I usually spend months and sometimes years, writing a feature film script. But I believe that some films have this unique destiny. और इस फिल्म को इसी तरीके से और इसी स्पीड में बनना था. तो 15 दिन में हमने स्क्रिप्ट लिखी, फिर things fell in place because everybody really got impressed with this character because of the novelty of the character. Right. So हर कोई, then we got the funds in place. And we started shooting. We landed in Banaras on 12th February 2019, and we started shooting on 19th March. Just like a month right later. And it says that I believe a lot in serendipity. Things just fall in place, and universe conspires for certain ideas to become art or film. So we shot for around 22 days. And we came back to Bombay on 12th April after shooting the film. But the post-production took a really, really long time because we ran out of funds. We had no money to complete the film. So we shot the film in 2019, but the film was only completed end 2020, October 2020. So post-production took a long time. So I know that filmmaking is a very tedious process. बनाने में बहुत time लगता है. But interestingly that I read up on the film. आपने film camera choose किया, like for the shooting of the film. So in a way, film camera is also very dying, like technology in a way. Like I haven't seen a film जो इतने time से film camera में use हुई हो, like shoot हुई हो. सब लोग digital करते हैं. So how did the idea come up कि film camera पे shoot करते हैं इसको? So basically, in a lot of ways, it is not an unpleasant feeling seeing tradition die, seeing film go out to make way for digital. Because, when I came to Bombay and started working, the film was just making an exit, the negative celluloid. And I happened to shoot a few advertising campaigns on Super 16 on film. Okay. And I was instantly in love with the format. And I feel no matter how much advancement happens in digital technology, it can't match film. Right. A digital print has an oil painting has more life than a digital print, right? So film is more organic. The reason why we chose to shoot Barah by Barah on film was purely artistic. It was an artistic call, creative call, and a very significant thing to happen in the history of this place, this town which is 5,000 years old, Banaras. It is undergoing a very unpleasant transition where a lot of old houses and lanes were being demolished while we were there, and to make way for the Ganga Kashi Vishwanath corridor. So I thought it would be great if I can capture this turn of the leaf, this transition on film, and it will be forever and it will be preserved, because it is an important chapter in the history of this place. And the change is so unpleasant. So what better to preserve it on film? Great idea. I mean, like I have only seen the film camera एक बार, like, or I saw it and it felt a very physical way of shooting a film, because digital is like, चलो shoot कर लिया, but
a film camera is such a physical thing that you want to take care of it, कि इसको संभाल के रखते हैं थोड़ा सा, कुछ issue ना आ जाए. It is a part of the team in a way. So I get the idea. Why did you choose the film camera? So I guess you'll be surprised right. to know कि अभी बहुत सारी फिल्म पे शूट हो रही है, स्पेशली इन वेस्ट. बहुत सारी फिल्में, इंडिया में शायद उतनी नहीं, बट मेरा ये पक्का बिलीफ है कि फिल्म इज गोइंग टू मेक अ कमबैक इन अ बिग वे. ओके, इट्स इनएविटेबल. और आप देखोगे पिछले 2-3 साल की कितनी सारी फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट स्टॉक पे शूट हुई हैं वेस्ट में. बोथ 16mm 35mm. काफी कॉन्स्टेंटली. अगर आप कोडेक की साइट पे जाओगे तो कोडेक की साइट पे वो लोग पेज मेंटेन करते हैं कि वर्ल्ड में पिछले साल में या इस साल में कितनी फिल्में स्टॉक पे शूट हो रही हैं, और पूरा रिकॉर्ड है. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स बीइंग शॉट ऑन फिल्म. Can you give some examples? I'm not aware of them. So there is I can give you a few examples. There is there's a black and white film which released on Netflix a while back. It's called Lighthouse. It's a 2-character film set in one house, shot in black and white. I'll remember the name. But to give you an example of an Indian film, Kadvi Hawa was shot on film. Okay. Right? Titli was shot on film. Titli, the Shashank Arora one, if you're saying, like the actor jo hai. Yes, that film was shot on Super 16mm. Okay. And Europe mein to it's a very there is a series called Euphoria on Hotstar. Right. So a lot of that is shot on 16mm and 35mm, both the seasons. Great. So there are so many examples, and there's so many films being shot. And even in terms of the physical aspect of it, कि ये कैमरा संभाल के रखने वाला, see, more than that, क्योंकि कैमरा as a physical entity वो तो digital में भी है. There's so many, there are like hundreds of cameras around the world, different makes, different brands, different sensors, and all of that. So I think the most fascinating thing about celluloid, shooting on celluloid, is the mysterious nature of it. It's the chemistry of it, because when you're shooting digital, what you see through the eyepiece is what you get, the image that you see. But with film, that is not true, because it's chemistry, it's silver halide, and also it's also the reaction of the chemicals. And that's how the image is formed. You never know till you see it later on, after processing and after scanning. So there's that mystery and there's that suspense to it, where how the final image will look. You have an idea of it when you're shooting it, but because the image ये chemistry से छप रहा है वो negative के ऊपर, तो उसमें वो एक mystery है कि क्या होगा finally, which amazes me. That mystery. Yes. I mean, मैंने कभी shoot नहीं किया, but it sounds amazing कि like I've seen a film camera, as I said, but shoot करने में it would be a great experience. So again, coming back to your film, I wanted a brief explanation of the character of the film. Like Suraj is the main character of the film. How did you come up with his story and उसके आसपास की story? How did you write the character in the film? So जब हम बनारस पहुंचे तो हमने जो पहली चीज की, हम वहाँ पे एक रियल डेथ फोटोग्राफर है, नाटे, इंद्र कुमार नाटे, उसका नाम है, और वो काफी कोकी, काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. तो उसके साथ थोड़ा घूमना शुरू किया, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू किया, बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ ही वर्क्स. आई वांटेड टू स्टडी हिज मैनरिज्म्स. आई वांटेड टू, बिकॉज मेरे लिए एक बहुत फैसिनेटिंग चीज थी कि यूजुअली जब आप फोटोग्राफर होते हो तो आप अपने सब्जेक्ट्स को ब्रीफ कर सकते हो. You can ask them to smile, you can ask them to pose and stuff like that. But when you're shooting, when you're clicking dead, when you're clicking dummies, you can't even instruct them. Right. So I just wanted to know कि वो फोकस कैसे करता है, वो एक्सपोजर कैसे सेट करता है, वो कैमरा को कैसे पकड़ता है, कितना पैशन से वो करता है शूट. एंड ही वाज दे डू इट वेरी पैशनेटली, बिकॉज Banaras is all about Banaras thrives on death. There are so many death related businesses in Banaras, and in
in Banaras, death doesn't have a negative connotation. Death is a positive thing. Death is an inevitable thing, which it is, but we don't accept it. But in Banaras, everybody accepts it. It's a mundane thing. कि तुम चाय पी रहे हो, बाजू से body जा रहा है, कोई देखता भी नहीं. Like it's a way of life there, आप कहना चाह रहे हो? It's a way of life, and also, it hinges on that myth where if you get cremated in Manikarnika Ghat in Banaras, you will find salvation. Right. So a lot of people come there, they have this belief कि भाई मुक्ति मिलेगी and all of that. And it is believed very strongly by the people there, and all of that. तो वो कैरेक्टर को स्टडी करना शुरू किया, उसके साथ घूम के, उसका स्टूडियो देखा, उसका वो कैसे फोटोज क्लिक करता है, वहां से वो कैरेक्टर निकला, और वहां से सूरज का जन्म हुआ. और we were very clear कि what we wanted to do is didn't want to make an overtly dramatic film. ये पहले से पता था. Also we were very very clear कि हमको एक और बनारस फिल्म नहीं बनानी है, हमको ओवर रोमांटिसाइज नहीं करना है बनारस से. जैसे because filmmakers usually fall in this trap where they fall in love with the ghats and all of that. तो हमारा ये क्लियर था कि हम घाट पे उतना ही जाएंगे जितना ये कैरेक्टर जाता है, और जब ये जाता है, ठीक है. और हमारा the choice of our compositions, our lensing and all will not depend on the exoticity, so-called exoticity of this place. Right. It will be purely driven by the narrative, the story we want to tell. तो वहां से फिर जब लिखना शुरू किया तो उसके रिलेशनशिप्स का जन्म हुआ, उसका फादर, उसकी बीवी, उसका बच्चा. फिर एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है कि जो उसका फ्रेंड का कैरेक्टर है दुबे, दुबे का कैरेक्टर है, उसका जन्म बहुत एक फनी इंसिडेंट से हुआ. तो पहले दुबे का कैरेक्टर नहीं था स्क्रिप्ट में, मतलब हमारे जहन में नहीं था. तो हम लोग कास्टिंग जब शुरू की हमने फिल्म की, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर को वू करने की कोशिश कर रहे थे हम, लाइक अ बिग कास्टिंग डायरेक्टर, कि भाई हमारा कास्टिंग फ्री में कर दो, क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास, या एक नॉमिनल पैसा था जो भी. तो कास्टिंग डायरेक्टर ने हमें बोला, देखो मैं तुम्हारी फिल्म का कास्टिंग कर दूंगा, बट तुम्हें मेरे लिए कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, लाइक वन पिवटल कैरेक्टर जो विच आई वुड लाइक टू प्ले, सो उसने कंडीशन रखा. तो हमने बोला ठीक है, अभी तो हम लोग राइटिंग स्टेज पे है, तो वी क्रिएटेड अ कैरेक्टर, वो फ्रेंड्स कैरेक्टर वैसे उसके लिए हुआ ताकि वो कास्टिंग डायरेक्टर ऑन बोर्ड आ जाए. तो फाइनली हुआ क्या कि दैट कास्टिंग डायरेक्टर डिडंट एंड अप डूइंग द फिल्म, बट वो कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया फ्रेंड का, राइट. एंड ऑल्सो ही रिप्रेजेंट्स दैट अनप्लेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन वाराणसी, बिकॉज उसका घर डेमोलिशन में टूट रहा है, and all of that. So he represents that, his track represents the so-called the political undertones in the film. Correct me if I'm wrong, he was in Vasipur, right? I've seen him somewhere. Dubai. Yeah. Right. I have seen him. That's right. So again, like we were talking about characters of the film. Like personally, I have an opinion that silence also played a major part in the film. So it almost felt like a character कि ये character है एक film में silent. तो why did you choose कि silence हम लोग use करेंगे इतना in the film? तो मेरा जिंदगी में मेरा मानना ये है कि साइलेंस जो है, साइलेंस साउंड और म्यूजिक के जितना ही इम्पोर्टेंट होता है जिंदगी में, कि जितने इम्पोर्टेंट साउंड्स हैं उतना इम्पोर्टेंट साइलेंस भी है. एंड अगर आप और फिल्म में ये कन्वे करना और ये चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक फिल्म जब बनाते हैं तो आप शुरू से एंड तक डायलॉग नहीं लिखते हो, या आप शुरू से एंड तक आप साउंड ट्रैक नहीं लिखते हो, नहीं लिखते हो. तो साइलेंस ये एक इक्वेशन होती है. वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक साइड पे साइलेंस का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है. राइट. क्योंकि साइलेंस ना बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, ठीक है. साइलेंस इक्वलाइजर होता है, साइलेंस रिलीफ होता है, कभी कभी साइलेंस चीजें कन्वे भी करता है बिना बोले, और तो इसीलिए साइलेंस सही मात्रा में एक फिल्म में होना बहुत जरूरी है. एंड बेसिकली मेरा जो भी फिल्में मैं जिंदगी में बनाऊंगा, मुझे पता है कि उसमें वही मात्रा में साइलेंस रहने वाला है, प्रॉब्ली, या ज्यादा मात्रा में शब्दों से.
क्योंकि जितने जरूरी शब्द है, आप देखो कि ये काफी विजुअल फिल्म है, एंड बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, फिल्में देखने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद ये चीज समझ में आई है कि जो चीज आप दिखा रहे हो वो आप बोलो मत, और जो चीज आप बोल रहे हो वो दिखाओ मत। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और जो चीजें आप बोल भी रहे हो ना, वो उसके बोलने में साइलेंस का होना और पॉजेस का होना बहुत जरूरी है। वो रिलीफ, वो ठहराव होना बहुत जरूरी है, कि जिंदगी भी तो ऐसी होती है। हम तो हर रोज जीते हुए तो हमारी कितने दिन के 3-4 घंटे तो हमारे साइलेंस में बीतते ही होंगे ना, या हम लोग बिताना चाहते होंगे, बिता नहीं पाते होंगे। तो जैसी जिंदगी है, फिल्म भी वैसी ही होनी चाहिए ना। उसमें सही मात्रा में साइलेंस भी होना चाहिए, उसमें सही मात्रा में शब्द भी होने चाहिए, संगीत भी होना चाहिए, दूसरे साउंड भी होने चाहिए, नेचर भी होनी चाहिए। राइट, फेयर पॉइंट, दैट्स व्हाट आई फॉलो। ग्रेट। अगेन लाइक हम लोग की पहले भी बात हुई कि पॉलिटिकल जो आपका एंगल आप कह रहे थे दुबे के कैरेक्टर में था, सो इन द फिल्म की पर्सनली आई सॉ कि काफी सटल पॉलिटिकल कमेंट्री थी उस फिल्म में, एंड नोइंग द फैक्ट दैट द सिटी से कौन रिप्रेजेंट करता है फॉर द सिटी, हाउ डिड यू टैकल द सिचुएशन की, हाउ डिड यू वांटेड टू पोर्ट्रे कि इस पॉलिटिकल इसमें लेके आते हैं, बिकॉज बनारस इज अ पॉलिटिकल, very political city, and again UP is a political state. So how did you portray the subtle political commentary, pointing out कि when I see the मैं film देख रहा था, like wall में एक painting में था, and necessarily कोई painting का subtitle नहीं डालता फिल्म में, and you put that subtitle, so that caught my eye. So can you just एक बार आप explain कर सकते हो the subtle political commentary in the film? सो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। हर एक का, वो कोई कितना भी बोले मैं एपॉलिटिकल हूँ, हर एक का एक पॉलिटिक्स होता है, यू नो। और हर चीज का, और आप देखो ना, कोई भी आर्ट का भी पॉलिटिक्स आप निकाल सकते हो स्टडी करके। तो पॉलिटिक्स तो इंटीग्रल पार्ट है, और अपने आप अपने को अलग नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से। तो लेकिन मैं जिस तरीके का मैं फिल्म मेकर हूँ, या जिस तरीके की फिल्म में मेरी सेंसिबिलिटीज है, मैं ना ऑडियंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं ऑडियंस को इडियट नहीं समझता हूँ कि अरे ये उनको समझ में नहीं आएगा, या मुझे और ये 4 लाइनें डाल के बताना पड़ेगा, ऐसा। मैं मेरी ऑडियंस को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मेरी ऑडियंस को लर्नेड समझता हूँ, कि उनको करंट अफेयर्स का ज्ञान है, उनको पॉलिटिक्स का ज्ञान है, वो फिल्में देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उतना पार्टिसिपेट कॉम्प्रिहेंशन में वो भी करे मेरी फिल्म के, ठीक है। तो इसलिए आई लाइक टू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स अनसेड, एंड दैट इज आल्सो माय स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, यू नो। मुझे अगर 4 चीजें कहनी है, तो मैं 2 चीजें कहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ऑडियंस बाकी की 2 चीजों का जवाब खुद निकाले ढूंढ के, क्योंकि मैं काफी सबटेक्स्ट में बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो मेरा पॉलिटिक्स भी वहीं से आता है, वेयर मेरा पॉलिटिक्स आपके गले से नीचे जबरदस्ती नहीं उतारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरी वॉइस है, या जो मेरा वर्ल्ड व्यू है, उसके हिसाब से मैं सटनली थोड़ा स्प्रिंकल कर दूं, ठीक है, नमक अनुसार। और उसका आप स्वाद लो, किसी के लिए वो थोड़ा ज्यादा कड़वा हो सकता है, किसी के लिए वो फीका हो सकता है, किसी के लिए वो सही हो सकता है, लेकिन पैलेट सबका होता है। तो इसीलिए आप ये फिल्म में महसूस करोगे कि पॉलिटिक्स को बहुत, या मेरे वर्ल्ड व्यू को बहुत सटल तरीके से वो ढाला गया है उसके अंदर। और मैं जो महसूस करता हूँ चीजों को लेके, जैसे जब मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो मेरे स्क्रिप्ट में, मेरे काम में कुछ थीम्स कॉमन होती हैं हमेशा, दैट आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट माइग्रेशन एज अ थीम। तो मेरे मोस्टली हर काम में माइग्रेशन एज अ थीम रहता ही है, और ये फिल्म का भी मेजर थीम माइग्रेशन है। फिर मैं जो एक और चीज महसूस करता हूँ कि जो एक हिस्ट्री वर्सेस डेवलपमेंट, या ट्रेडिशन वर्सेस डेवलपमेंट, मॉडर्निटी वर्सेस डेवलपमेंट वाला जो मामला है, उसके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर ट्रेडिशन को खत्म कर रहे हैं। ये मुझे पता है कि ये एक चीज इनएविटेबल है कि ट्रेडिशन हैज टू मेक वे फॉर मॉडर्निटी एंड ऑल ऑफ दैट, बट मुझे लगता है कि एक बैलेंस भी हो सकता है, कि आप वो ट्रेडिशन को कंप्लीटली किल करके, किल ना करें, तो भी डेवलपमेंट आ सकता है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि
ट्रेडिशन जो है वो सहेजने की चीज है। तो ये सब थीम्स के बारे में मैं स्ट्रांगली बिहेव करता हूँ, ये मेरी फिल्म में आ ही जाता है। और लाइक आई सेड कि आई डोंट फोर्स डाउन माय पॉलिटिक्स और माय फिलॉसफी, आई जस्ट लाइक टू लाइक स्प्रिंकल in the film in the scenes through characters voices and through characters philosophies, और बाकी ऑडियंस का ग्रास्पिंग ये है। जो वॉल पे आप बोल रहे हो सबका साथ सबका विकास, तो उसका सबटाइटल एक्चुअली होता है, फिल्म में लोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपकी ये फिल्म फॉरेनर्स भी देखने वाले हैं, दुनिया में हर कोने में लोग देखेंगे। सो these campaigns, these lines, these slogans are important integral parts of any parties and political philosophy and all of that. So उन लोगों को भी ये समझने के लिए वो सबटाइटल होना जरूरी है, and also it is a fabric, it's a part of the fabric that you are weaving in your subtext of the film, so that is why it has to be spelled out. I get the point, right? Like a subtle way में present करना पड़ता है ताकि it gets a secondary edge to, it gives a secondary edge to the film in a way कि like उसने filmmaker ने सोचा है. So I get the idea. Okay, so coming to the making of the film, in the particularly the shooting of the film, like we already talked about film camera, or like why did you use the film camera? In the film I saw कि काफी shots were very still framed, like you use a still frame a lot, like आपने कैमरा एक जगह रख दिया and you just let the characters be, कि उन्हें they were playing their characters and it felt very real. So why did you choose कि एक still frame use करता हूँ film में? So what was the idea behind it? Still frame, by still frame you mean static shots, right static movement and yeah. So basically ये about scripting का, स्क्रिप्ट लिखते टाइम ही एक ट्रीटमेंट स्टाइल हम लोग का डिसाइड हो गया था कि this film we are going to observe and not intrude. So we wanted the film to have a certain observational quality than an intrusive kind of a treatment. Right. So it was a conscious treatment decision. अगर आप सेम कहानी या सेम स्क्रिप्ट को उठा के एक हाईली ड्रामेटिक फास्ट कटिंग वाला फिल्म भी बना सकते हो, ओवरटली ड्रामेटिक बनाई जा सकती है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बनारस है, रिलेशनशिप्स है, ड्रामा है, फादर सन सीन है, एक कैरेक्टर का घर टूट रहा है, तो उसमें वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं कि इससे हाईली ड्रामेटिक फास्ट कटिंग फास्ट पेस फिल्म भी बनाई जा सके। बट इट वाज आवर डिसीजन to make a different film, to make an observational film where it almost at times feels like non-fiction. Right. So इसलिए most of the scenes are like one-shot scenes where the camera is just an observer and the scene is unfolding and we are not cutting at all. We are not cutting to close-ups. We are not trying to compress time. We are letting things unfold, right while observing things. So like it again कि ये सब like before shooting ही आपके पास idea है, right? Like you had a basic idea कि ऐसे करना है. So in a way कि how do you write this in the script? Like do you write this in the script or you tell your crew कि ऐसे shoot करेंगे? Like how do you can't really write this in the script. Right. Some people write camera angles, camera movements in the script and all, but actually this is the design of the film. This is a part of the treatment. So a script में आप ये सब नहीं लिख सकते, but it is a part of the design that which happens obviously before shooting, while you are churning the film in your head, while you're writing it, or during the pre-production. ये प्रोसेस चलता रहता है and it is a part of the treatment. So basically when the crew comes together and you do readings together and when you are constructing things together, then you convey this to the people that's how I'm going to treat the film. This is how the scene construction in terms of shooting it will be. क्योंकि एक scene construction आपने script में कर दिया, but then while executing there has to be another kind of construction.
which is part of the treatment, how you are seeing the film. So that has to be conveyed to the people, right? So that's how it happens. Okay. So in a way, it was a subtle way again कि एक मैं धीरे से portray कर दूंगा ऐसा अपना character. A filmmaking hack one can say कि still frame for like grasping or depth के लिए use किया आपने for more depth of the character. Yeah, I mean, it's like I said, it's a one kind of a design that you do. Depth तो देखो क्या है कि there are other kind of films which has a lot of cutting within the scenes. और उसमें भी depth और उसमें भी वो वही philosophical value उसका हो सकता है and all of that. But it's like I said, it's just one kind of design, which is the observational one, not cutting too much. तो वो उससे ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा डेप्थ आ जाएगा या उससे ऐसा कुछ नहीं है. डेप्थ तो मटेरियल में होता है, डेप्थ तो आपके कंटेंट में होता है, ठीक है. अब वो कंटेंट को आप शूट 10 तरीके से कर सकते हो, 10 अलग अलग तरीकों से, लेकिन वो 10 अलग अलग तरीकों का जो चुनाव है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है. वो फिल्म मेकर टू फिल्म मेकर वेरी करता है. Right. I get your point. Also, I guess this would be my last question to you. कि as filmmakers and as independent filmmakers, film बनाने के लिए बहुत एक like we need a certain amount of money to make a film. So how did you get the funding for the film and how did you manage the finances to make the film? Because shooting in a place like Varanasi, which is at least not in Bombay, you have to give the rent. Yeah, you have to give some amount of budget there as well. So how did you manage the budget and funding for the film? Because as independent filmmakers, this is a really tough like aspect of filmmaking. So how did you manage this stuff? So ये filmmaking, independent filmmaking की harsh reality है कि पैसा रेज करना, पैसा जुगाड़ करना स्ट्रगल होने ही वाला है. It's a struggle that you will have to live. Right. You will have to go through. You as an independent filmmaker, ये या तो फिर कई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आते हैं जो अपना घर बेच देते हैं, ठीक है, या अपना जमीन बेच देते हैं, उससे वो फिल्म बनाते हैं, ठीक है. अदरवाइज ऐसा अगर कुछ सीन नहीं है या आपके पापा आपको लोन नहीं दे रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, तो यू हैव टू गो थ्रू अ स्ट्रगल ऑफ रेजिंग द फंड्स. तो अभी वो फंड रेज करने वाला जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है. या तो कभी कभार आप अपने दोस्तों से ले लेते हो पैसा, या कोई लाइक माइंडेड पीपल हैं, लाइक माइंडेड प्रैक्टिशनर्स हैं, या देयर आर आल्सो दीस स्मॉल टाइम इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हु वांट टू इन्वेस्ट और बैक मीनिंगफुल फिल्म्स. तो अगर आप उनके टच में हो तो उनसे आप ले सकते हो. सो देयर आर डिफरेंट वेज. इन आवर केस the funds are mostly raised from friends and like-minded individuals, right? Who believed in this content and who generally believe in a certain kind of content. तो उनसे हम लोग ने रेस किया. Like I said, कि process was not easy. हालांकि शूटिंग के लिए जितना पैसा चाहिए था वो हमने जल्दी ही जुगाड़ लिया था, because कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग था and like this thing just fell in place. बट हमारे पास पोस्ट कंप्लीट करने के पैसे नहीं थे, तो वो पैसा जुगाड़ करने में हमारा 1 साल चला गया. और हमें दर जाके हमने भीख मांगी कि हमें पैसा दे दो, हमारी पहली फिल्म बना रहे हैं. तो प्लस अपना भी फंड, तो अपना रिसोर्सेज भी घुसता ही है उसके अंदर. हमने क्राउड फंडिंग भी किया टू रेज सम मनी. तो इट वाज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो समझ में आया, जो दिमाग में आया उससे मांग लिया. तो रिसोर्सेज ये फिल्म में हर जगह से आए हैं, कई अननोन लोगों से भी आए हैं रिसोर्सेज, जिन्होंने बिलीव किया है ये फिल्म कंटेंट में और वो सब. तो अभी ये जो रिसोर्सेज है हर फिल्म में ये अलग अलग तरीके के, अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, बट एसेंशियली वो स्ट्रगल सेम होता है. Like there is a struggle in like filmmaking में काफी है. So I guess that Gaurav, that's it from my side. It was a great discussion. Like it is genuinely have been one of the best discussions that I have conducted personally.
Also, I hope कि आपकी film और जीते, like you said that in our informal conversation that you mentioned कि आप अभी केरला से आए हो, like your film won an award as well. So I'm hoping कि it does more rounds in the festivals, and I genuinely hope that you collaborate in the future as well. Like you said that you are making another film, a new feature film. So I hope that you bring that film to our festival in the future. So Sure. if you have anything to say, Gaurav, to our audience. I think what I would say is that you should come to these kind of festivals in more numbers and encourage, because be it a festival or a theater, or a TV or a mobile, everybody needs an audience. Okay. Without audience, an art needs an audience. So I would urge people to come in great numbers and watch all the films and encourage. And I think you guys are doing a commendable thing running this festival. I know how difficult it is even to run a film festival, and because there are so many things involved in the background. So I think I would urge people to watch the films, give their valuable feedback, and encourage both the festival organizers and filmmakers. Yeah. Okay. Thank you so much, Gaurav. This was genuinely a great conversation. I hope that you collaborate soon. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. See you.